Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. As I always say, this is our fifth episode of Being Social. And Being Social is basically a platform where I try and bring experts in their own domain who just simply talk here and discuss their experiences, their learnings, and if they have anything to say, there are learnings for youth and others. So today's guest we have is a renowned academician, Dr. Rajeev Mohan Pant. We share this surname, and he is currently Vice Chancellor of Central University called Assam University in Silchar, and he has had illustrious career before this, and we will hear it from him. And to my understanding, he has his other hats of playing hockey and participating in theaters, and he's written 10 or 12 books, and as professors they keep writing articles. So Rajiv, welcome to our show. Thank you. And Thank you, sir. please tell us about yourself, your initial education, your journey to education, and then in the service. All right. First of all, thank you so much for giving me an invitation to be a part of this Being Social. I have been watching your earlier episodes. I have watched your earlier episodes, and I was quite impressed the way you handle this, and it's a wonderful initiative, I must say. Journey, like I was born and brought up in Uttarakhand, erstwhile UP, and got my schooling. I very proudly say that I studied in UK. Okay. So Uttarakhand, not United Kingdom. Journey started from Almora, then I was in Kasipur for a long time, and then in Nainital. I did my masters in economics from Nainital, and my experience of Nainital was very enriching, and I learned a lot from the environment that Nainital offers, and especially my college, TSB College, Kumaon University. That was a great learning experience. But prior to that, I was in Kasipur also. There also we had some wonderful experiences. So, and journey after completing my post graduation, I joined BIT Mesra as a lecturer. I was just 25 years old when I joined BIT Mesra as lecturer, and then continued working there till 86. From 86 to 1993, I was in BIT Mesra for about a period of 2 years, 1 year and 9 months to be precise. I was sent on deputation to Bhimtal, Birla Institute of Applied Sciences, and from there I went back again to Ranchi, National Institute of Foundry Force Technology. Worked there till 1997, and came to Arunachal, where I spent my maximum service period. I was a part of Northeast Regional Institute of Science and Technology, that is in Guwahati. And then for about 7 years, I was again on deputation to National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, that's in Guwahati. And I was responsible for this RDF, Rural Development Affairs of all 8 northeastern states. That was again a great learning experience. And since 25th January 2022, I am working here as Vice Chancellor. This is, my journey in brief. 64 years journey, narrated in just 3 minutes time, 3-4 minutes time, that's it. So great. Although you have been an economist by education, but you have been moving to scientific institutions and rural development, and well, yes, economics comes everywhere. So how do you reconcile between economics and applied sciences and science and technology and rural development? Economics, of course, is a very, very important science. And besides economics, I did my MBA also. So that again gave me some different skills.
But anyway, economics is there in everything. Uh, Without economics, there is nothing that can really sustain. In academic organization, in scientific organization, in business organization, we need to have certain knowledge of economics. We need to know about demand. Uh, Very important. Great. So, tell us something about your books you wrote. Okay, I do not remember exactly. I have written 10, 12 books, uh, ranging from uh, doubling farmers' income and organic farming and then tourism. My first book was on uh, aged population. In fact, I organized one conference on the aged people of Arunachal Pradesh, sponsored by Indian Council of Social Science Research. And whatever inputs, whatever insights I got out of that conference, I compiled that in the form of a book, and that was my first book. But my writing, uh, you know, stint is very, very old. When I was in class 9, along with my elder brother Rajesh, we started a magazine called Anmol Masik. It was a monthly magazine, and in Hindi, and we were very privileged to get the support of some very renowned literary people of that time. Shiv Mangal Singh Sumanji, who was a great writer, and he promised us that since you all are very young and you have ventured out to bring out a magazine, so I will give you one article in all your you know issues. And he really lived up to his promise. And we got sponsorship for bringing out this magazine from sugar factory, Radhe Hari Sugar Factory of Kasipur. They used to give us 5,000 rupees, and then we used to sell this magazine for 50 paisa. And we got a very good response from our readers. It was so basically it's my writing journey started from that age. But then, of course, my elder brother left for Nainital for his higher education, and I was left alone. So it lasted for 1 year. We successfully published this magazine, Anmol Masik, for 1 year, and after that, we had to discontinue. Okay, now that we are in the timeline, tell us something about your other passions, hockey and theatre, and any interesting episodes or your managing time with hockey and your classes, any problems and issues with your professors on that. Okay. Uh, I must say that I tried everything in my life. Okay, I consider myself a jack of all trade and master of none. So, of course, sports have been a passion for me right from my childhood. And during my school days, I used to represent my school team in cricket, hockey, football, and even table tennis. And I attended two national level camps in table tennis and also in hockey. And then I came to Nainital and continued with my hockey thing and all. Played at national level in inter-university hockey tournaments and all that. It was really very difficult to you know attend those coaching camps, especially when coaching camps, before we used to go for inter-university hockey tournament, there would be a coaching camp in stadium in Nainital during winters. And you know the climatic conditions of Nainital. It used to be so cold, and frost would be there. And my house is in Airpata Hill. So while coming down, it was very slippery, and that is how we used to manage. And then our coach, uh, Dr. Aleb Saji, was our team manager and also coach. He himself was a great player, uh, very strict disciplinarian. He had that army background. He would call everybody at 4 o'clock at the sports ground, and till sun would rise, he will make us run around the Nani Lake. So maybe around 5 6 kilometer,
and then upward towards university side. And by the time we are fully warmed up, then we used to play. Then we used to practice hockey. Otherwise, before that, warm up and stamina building and all that. So it was a very tough thing, and especially uh, during those freezing winters, we had to come to sports ground for practice and all. It was a very difficult experience, but that, of course, made me quite disciplined. Yes, and those were the days, viewers, in our times when the playing sports and joining other activities was considered to be waste of time by the parents. And that very oft repeated जो होता था जुमला पढ़ोगे पढ़ोगे लिखोगे लिखोगे तो बनोगे महान खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब so now the things have नवाब एंड खराब पढ़ोगे Yeah. लिखोगे बनोगे नवाब खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब बनोगे- तो मैं उन खराब लोगों में से एक था एंड ऑफन पीपल डाउन प्लेड माई अचीवमेंट्स क्या ये खेलता रहता है और पढ़ने वढ़ने में मन लगाएगा तो कुछ बनेगा किसी दिन सबके साथ होता था कुछ थिएटर के बारे में बताइए थिएटर थिएटर तो एक्सीडेंटल एक्टर बन गया था मैं I was very shy and I was I would be very nervous while interacting with the people and all. So my brother Rajesh, he's my mentor also. So he suggested that you must act on some plays and all. So he literally forced me. No, you have to, participate in. We in Nainital we used to have a very good dramatic festival there, drama festival every year, and which produced very good, very renowned actors. To name a few, I would say Nirmal Pandey was my batchmate. बैंडिट क्वीन का बैंडिट क्वीन के जो हीरो थे वो मेरे बैचमेट थे और फिर उसके बाद अभी लास्ट ईयर जिनको साहित्य संगीत नाट्य अकेडमी मिला है जहूर आलम जी, ही वॉज अवर सीनियर एंड देन वो एक्टिंग वगैरह सिखाते थे. उन्होंने युवा मंच युग मंच बनाया है उधर जो कि बट मैं ऐसा कोई एक्टर नहीं था बट जस्ट टू गेट रिड ऑफ माई साइनस माई ब्रदर फोर्स्ड मी एंड टू गो टू द स्टेज. एंड वहाँ एक बड़ा जोरदार किस्सा है कि हम लोग एवं इंद्रजीत प्ले कर रहे थे और उसमें हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं इसमें कोई नर्वस होने की बात नहीं है, इसमें डू वट एवर इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है आपके लिए कुछ भी करने के लिए. इसमें आप कुछ इधर उधर भी चले जाओगे तब भी दैट विल नॉट स्पॉइल द स्क्रिप्ट ऑफ दैट प्ले. तो एक बार वो किनारे से आंखें दिखा रहे थे कि तुम भी कुछ करो, बाकी सारे एक्टर्स कुछ कुछ कर रहे हैं. तो मैंने कहा कि ठीक है क्रिकेटिंग एक्शन मैंने दिखाया तो भीड़ से आवाज़ आई, हे राजीव यू आर ए हॉकी प्लेयर, क्रिकेट कब से खेलने लगे. एंड देन आई वाज बिकेम सो नर्वस, माय फेस टर्न रेड, started sweating even in wintry cold weather of Nainital. But then my director was smart enough and he immediately covered it up with a chorus. सब करते हैं इसीलिए हम भी करते हैं. एक कोरस था जिसको कि वी यूज्ड टू सिंग इंटरमिटेंटली, तो उन्होंने फिर वही शुरू कर दिया तो somehow I took a sigh of relief. एंड एक इदरीस मलिक भी था, उसने इदरीस मलिक ने हमारे वो भी अगेन इसमें था NSD से पास आउट था, उसने भी बॉलीवुड में भी काम किया छोटा मोटा मतलब कई फिल्मों में जो रोल थे उसके. तो इदरीस मलिक ने एक था गधा अलादाद किया था तो उसने भी हमें खूब गधा बनाया उसने. काफ़ी रगड़ा बट एनीवे दैट वाज ए ग्रेट हिट एंड इदरीस इज ए वेरी गुड एक्टर एंड स्टिल कंट्रीब्यूटिंग टू थिएटर्स एंड आई एम श्योर ही विल आल्सो बी गेटिंग सम गुड अवार्ड्स इन इयर्स टू कम. ग्रेट, ये तो आपकी बड़ी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है. नाउ लेट्स गेट बैक टुवर्ड्स एजुकेशन. नाउ हाउ डू यू सी द difference in discipline and enthusiasm for learning among students and for teaching amongst teachers then? That was about 40 years back and now. I think during our time मैं अक्सर कहता हूँ कि पहले पैसा नहीं था, पैसन था. Teachers used to get very less salary but they were very passionate about it. एंड उनके वो पैशन के चक्कर में कभी कभी दे बिकेम इवन क्वाइट बिट हार्श ऑल्सो विद द स्टूडेंट्स. दे वांटेड स्टूडेंट्स टू लर्न एवरीथिंग एंड कम व्हाट मे, इवन इफ दे हैव टू बी लिटिल हार्श विद अस, दे मेड अस लर्न ऑल दोज थिंग्स.
तो दैट पैशन वाज देयर, पैसा नहीं था, पैशन था। अभी आज की डेट में क्या है कि वी टीचर्स आर गेटिंग वेरी गुड अमाउंट, वेरी बिग पे पैकेज, बट समवेयर दैट पैशन इज मिसिंग आई सी। नॉट इन केस ऑफ एवरीबडी, देर आर सम वेरी पैशनेट टीचर्स वी हैव, बट कई बार देखने को मिलता है कि नाउ दैट पीपल विद मनी, ते कहते हैं कि मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स. So money is playing its role, and materialism is taking over that passion for teaching to some extent. But yes, about students, I would say students, मैं जब अपने को compare करता हूँ, during my college days, I wasn't that bright. आज के student को मैं देखता हूँ कि they are so bright and they have so many sources from where they can get knowledge. They have got wonderful exposure. आपको मैं बताऊँ, हम लोग तो we were very shy. I was very shy, and I remember when I joined BIT Mesra. I was also a trekker. I was a very keen trekker. I have done a lot of trekking in Himalayan region. So I founded one club in BIT Mesra called Highlanders Adventure Club. So I was a good worker. I organized trekking programs, but always very shy to speak to people. One day, our director, who's again my role model, Professor H.C. Pandeyji, he's a person who really, he's an institution builder, I would say. We invited him. I requested our dean student to, run the show. But then Dr. Pandey insisted that I give the vote of thanks. At the last moment, when we were about to close the program and all, he told Dean, ask Mr. Pant to deliver the vote of thanks. And Mr. Pant, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं. I do not know what I spoke there. I was so nervous, and when people like Dr. H.C. Pandey is sitting there in the front and all that, but that's how they basically motivated young people to come up in their lives and all. I'm so grateful to Dr. H.C. Pandey that we got the opportunity to learn from him. And again, my students used to think that I'm the only one who knows about Himalaya, or I'm the only one who knows about trekking. So जब हमने उनको अपने डायरेक्टर साहब को बुलाया H.C. पांडे जी को, तो I remember there was one boy who was very who used to admire my this trekking and mountain skills, Manish Gupta from Calcutta. He said, "Sir, you have invited Dairo, and what does Dairo know about all these things, trekking and all that?" I said, "Wait, just let him come." And he linked trekking and mountaineering with science, and he talked about glaciology. And then at the end, I asked Manish, "Do you know what Dairo is?" So this kind of experience I had, and I was very privileged to have met such wonderful people in my life that really enriched my learning, I would say. मैंने ये देखा है कि आजकल के स्टूडेंट्स को पता होता है कि वेयर इज देयर ट्रेजेक्टरी इन लाइफ इज गोइंग. हमारे ज़माने में तो पता ही नहीं होता था. एक बार ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तब भी लोग सोचते थे अब क्या करें. तो आजकल लोगों को एट ए वेरी यंग एज दे नो अबाउट करियर एंड द पाथ ऑफ देयर एजुकेशन एंड अचीवमेंट्स एंड जर्नी. तो आजकल इसलिए स्टूडेंट्स में थोड़ा वो फ़र्क मैंने देखा. तो आप यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, तो आप 18 आवर्स से जॉब डे वाला जॉब आपका है, तो घर में आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या आर यू, बिकॉज एट होम यू आर नॉट द बॉस. होम का तो बॉस कौन होता है, एवरीबडी नोज दैट, आई नीड नॉट स्पेल आउट. But we have to strike a balance. Work-life balance is very important, and this is what I tell to my students and all my colleagues also. बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से. मैं जब घर में जाता हूँ तो मैं 100% एट होम, और जब मैं ऑफिस में रहता हूँ तो मैं फिर घर के तरफ से निश्चिंत रहता हूँ. ये मैंने अभी यूज़ किया एक टर्म, वर्कोहॉलिक. ऑफ कोर्स आई एम नॉट वर्कोहॉलिक, बट जब मैं पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है. जब मैं NIRD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज में था डायरेक्टर उधर, तो हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रेड्डी साहब थे. 86 बैच के IAS ऑफिसर थे, वेरी नाइस पर्सन.
वो भी आते थे, गुवाहाटी अक्सर आते थे, वो हैदराबाद ऑफिस में बैठते थे। तो जब वो आए तो मेरी जो पीएस थी, मेरी बहन ही है, वो मुझे राखी भेजती आरिफा। तो आरिफा बहुत मुझे अच्छा मानती थी क्योंकि बड़ा भाई है। तो आरिफा ने उनको कहा कि सर, आवर डायरेक्टर इज ऑल्सो एन अल्कोहलिक लाइक यू। तो वो अल्कोहलिक और एल्कोहलिक में कंफ्यूजन करके तो हमारे डायरेक्टर जनरल को बोलते हैं आवर डायरेक्टर इज ऑल्सो अल्कोहलिक लाइक यू सर। वो भी मेरी तरफ को देख के मुस्काए। कभी कभी ऐसे भी होते हैं, इनोसेंट इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बड़े अच्छे लगते हैं, आपकी उसमें मिठास घोलते हैं। Yes, but I also understand from your colleagues कि in spite of being वाइस चांसलर आप बहुत सारी क्लासेस लेते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में, मास कम्युनिकेशन में, इकोनॉमिक्स में, ये सब हाउ डू यू फाइंड टाइम फॉर ऑल दिस? अभी मैं क्लास से ही आ रहा हूँ। अभी मैं एमबीए का एचआर मैनेजमेंट का क्लास लेके आ रहा हूँ, रिसोर्स मैनेजमेंट का। 10:30 से मेरा क्लास था। एंड आई एम बेसिकली टीचर। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो एडिशनल चीज़ें होती हैं, बट आई एम बेसिकली टीचर। एंड कोई भी एक अच्छी क्लास लेने के बाद आई फील दैट ऑल माई स्ट्रेस, हालांकि मैं कभी स्ट्रेस में आता नहीं हूँ, बट मेरा स्ट्रेस बस्टर की तरह से मैं आई यूज़ दिस क्लासेस, टेक ए गुड क्लास एंड इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स। मैं कभी कभी मजाक भी करता हूँ स्टूडेंट से, बोलते हैं कि आई डोंट जस्ट टीच स्टूडेंट, आई टीच स्टूडेंट्स एज वेल। तो काफ़ी स्ट्रेस बस्टिंग होती है उसमें। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट माई स्टूडेंट्स लाइक मी। Yeah, दैट नीति श्लोक में कहते हैं ना, बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम, बच्चों से भी अच्छी बात ग्रहण बहुत करनी सही, चाहिए। जी, तो जी। लर्निंग ऑल्सो Yes, कम्स yes, absolutely. ऑन द रिवर्स व्हेन Yes. यू टेक क्लासेस विद स्टूडेंट्स मेनी टाइम्स। जी। तो एंड आवर स्टूडेंट्स हैव गॉट गुड एक्सपोजर दीज डेज। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये तो हो गई बहुत सारी बातें। अब आप ये बताएं कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं आपकी नज़र में? अचीवमेंट मैं आउटकम्स की बात नहीं करूँगा, मैं प्रोसेस की बात करूँगा। मैं जब शुरू से ही, चूँकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और मैं डिसिप्लिन मेरा एक बहुत बड़ा वो है, और कोई भी काम हम जब डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो ऑटोमेटिकली अचीवमेंट्स हो जाते हैं। और मैं जहाँ भी रहा, मैं यही कहूँगा कि आई वॉज लाइक्ड बाय माई स्टूडेंट्स, आई वॉज लाइक्ड बाय माई पीयर ग्रुप, आई वॉज लाइक्ड बाय सुपीरियर्स, और विद देयर हेल्प, विद देयर कोऑपरेशन आई कुड अचीव। मैं जब नेरेस्ट में था, नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ भी कंटिन्यूसली एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास थी। मैं 4 बार हेड रहा वहाँ। मेरे एमबीए डिपार्टमेंट का फाउंडर मैं वहाँ था, और डीन स्टूडेंट अफेयर्स, डीन एकेडमिक, मतलब मैं भागना भी चाहता था जिम्मेदारियों से, पर जिम्मेदारी मिलती जाती थी। और पर उससे क्या होता है कि लर्निंग आपकी होती है। उससे मुझे फिर जब मैं गुवाहाटी में मुझे डायरेक्टरशिप मिली, दैट वाज एन अचीवमेंट इन ए सेंस। बट अचीवमेंट वो था कि मैं 7 साल काफ़ी कुछ वहाँ ऐड कर पाया, वहाँ के लिए अच्छे ढंग से काम कर पाया, उसको मैं अपना अचीवमेंट मानता हूँ। और उसी से फिर यहाँ का भी रास्ता खुला। यहाँ भी मैं टीचिंग और उसमें दोनों में मेंटेन कर रहा हूँ। मैं यही बेसिकली जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है कि हम उसको ढंग से कर पाएँ, तो मैं सोचता हूँ वही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एक चीज़ आपने भूल गया बताना, कल तो मैंने आपको क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखा। वो अगेन स्ट्रेस बस्टर्स है। हमारे यंग प्लेयर्स हैं बहुत अच्छे यहाँ पर। हमारे जितने भी असम यूनिवर्सिटी फैमिली के काफ़ी यंग लोग हैं, वो उनका वो है कि एक 64 ईयर ओल्ड 4 इयर्स यंग आदमी को भी टीम में उन्होंने मौका दिया। एंड आई एंजॉयड डूइंग ऑल दैट। Yes, even I enjoyed watching. By the way, this match was between the faculty of NIT Silchar and Assam University, and their director told me that the minimum qualification for being in the team or to be the coach is PhD. So everybody was doctor. So I was wondering why he's introducing everybody doctor. Then he told me this is only faculty, not students. Yeah. So it was great for people to see the Vice Chancellor himself in the university cricket team jersey and playing there. So these are moments Yes. You enjoy and cherish in life. Yeah. We have this kind of exchange programs often. Last year we went to NIT,
and they gave us a very humiliating defeat last year. But this time, I think our team did much better job. And again now, both the teams will prepare for third and the final round. Great. Rajiv, what is success according to you? Success, I feel that giving your best, ethical, it should be ethical. Many people, you know, achieve success using unethical means also, but that is not success. Uh, one must be ethical in approach, and one must try to achieve the targets using ethical approach. I remember words of Joginder Singh, the former CBI chief. He had written one article in Times of India long back, and that those words are printed in my mind. And he says that earlier we used to say that honesty is the best policy, but now in this age of information, honesty is the only policy. Because if a person is not ethical, person is not honest, will not be able to sustain. And he further writes that sooner or later, if a person is not honest, sooner or later, or rather sooner than later, person will be exposed. So I feel that by following ethical means, if you are able to achieve your targets, that's success. Great. And we are almost towards the end of our conversation. I am tempted to ask you, because you mentioned about discipline. If it is self-discipline, it's fine. But as a director or as a administrative head or as a vice chancellor, if you have to instill discipline amongst others, generally you become unpopular in general. How do you manage it? We have to create right kind of environment. Of course, imposed discipline is difficult these days. If we just stand on someone's head, if we go for policing, that doesn't help. But if we are, leading by leading from the front, I often take a lecture on this self-management. You very rightly pointed out, self-management is the best. उसमें एक गुड्डी फिल्म का एक गीत से मैं शुरू करता हूँ, हमको मन की शक्ति देना, हम मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें. तो self discipline is the best, and if we are able to instill this thing in the minds of others, that हम किसी को धोखा देके नहीं कर सकते, हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते. तो if we are able to create that kind of environment through counseling, through our actions, I'm sure this works. And this has worked. Wherever I have worked in any organization, I have seen people, following good role models. Like I also made a mention of a few role models. My eldest brother, late Hargobind Panji, is my role model. He's still my role model. He's no more. Then Professor H.C. Pandeyji, director of BIT Mesra, under whom I started my career. He's my role model. My brother Rajeev, and all my brothers, my sister, I am the youngest among all my siblings. So all my brothers, sisters, they groomed me to be disciplined, and same ethos we can spread among people also. That discipline is the best thing, and we can अपने को धोखा नहीं दे सकते, है ना. कहीं ना कहीं हमारे एक सेंस रहेगा कि हम लोग दूसरों को धोखा दे सकते हैं. Sometimes people listen to you out of respect, but they know whether person is honest or not. True. आप तो पॉलिसी मेकर भी हैं, इम्प्लीमेंटर भी हैं. अभी आजकल ज़माना बदल गया. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमनॉइड्स और रोबोटिक्स के ज़माने आ गए. Kerala, I read a few times that Kerala has started primary school में school teachers they are robots. They take classes with perfect training, and they're well equipped with artificial intelligence as well.
आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी में भी फ्यूचर में ऐसे रोबोटिक टीचर हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं दीज डे। आजकल न्यूज़ में भी देखते हैं कि वो रोबो न्यूज़ पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड, बट इट्स नॉट बी मिसयूज्ड। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि जो एजुकेशन है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग इंफॉर्मेशन, इट्स ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग कैरेक्टर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स। That I think robot, I do not know whether they'll be able to do that or not. बिकॉज टीचर्स का जो सबसे बड़ी वैल्यू आज भी देखिए, APJ अब्दुल कलाम जी को देखिए, वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, राष्ट्रपति रहे देश के, और वो जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सम्मान देते थे वो उनके प्राइमरी स्कूल के टीचर, प्राइमरी स्कूल के जो उनके हेडमास्टर थे, उनकी सबसे ज़्यादा वो सम्मान वो उनको देते थे। क्योंकि जो चरित्र निर्माण का काम है, जो कैरेक्टर फॉर्मेशन का काम है, वो टीचर्स कर सकते हैं। अब आप हम बोले कि पेरेंटिंग भी रोबो करेगा कल। हमारे हमारे जो पेरेंट्स ने हमें वैल्यू सिस्टम दिया है, आई डोंट थिंक रोबोट्स कैन गिव दैट काइंड ऑफ वैल्यू सिस्टम। जो अफेक्शन होता है, जो प्यार है, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, टीचर्स और स्टूडेंट का जो रिश्ता है, आई डोंट थिंक दैट कैन बी रियली डिलीवर्ड थ्रू रोबोट्स। ओके राजीव, बहुत सारी बातें हमने कर ली। एक हमारा सेगमेंट है टुवर्ड्स द एंड, आई कॉल इट रिफ्लेक्स आंसर, जिसको रैपिड फायर क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है तो माय नोट्स आ दिया, तो मैं एक्सटेम्पोर आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इसका एक वर्ड्स में या एक दो तीन वर्ड्स में आप जवाब दे सकते हैं। यू कैन स्किप ऑल्सो। एजुकेशन की क्वालिटी पहले अच्छी थी कि अब अच्छी है? दोनों में ठीक है, बस थोड़ा प्रोसीजर चेंज हुआ है बस। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज रेवोल्यूशनरी है। अंग्रेजी या लोकल लैंग्वेज? दोनों। वैसे लोकल लैंग्वेज हो तो ज़्यादा अच्छा है, अंग्रेजी भी चाहिए क्योंकि हमें पूरी, जब ग्लोबलाइजेशन में रह रहे हैं तो अंग्रेजी भी जानना जरूरी है। डिसिप्लिन बाय एग्जाम्पल और पनिशमेंट? बाय एग्जाम्पल। एंड वैसे एक ये भी है कि डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। देयर आर सर्टेन इनकॉरिजिबल पीपल, देन यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम, बट अदरवाइज सेल्फ वाला ज़्यादा अच्छा है। What is more demanding, teaching या administrative job? टीचिंग इज, आई थिंक, बिकॉज टीचिंग में क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में आपके टीचिंग में एवरी व्हेन यू गो टू टेक ए क्लास, एवरी टाइम यू आर बीइंग असेस्ड बाय वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स। एक क्लास की फेलियर वी कैन रियली पुट यू ऑफ। What is more fulfilling, administrative job या teaching? टीचिंग, ऑफ कोर्स टीचिंग। Now finally, commercialization education या a balance? I feel that we should not subscribe to those education shops. Commercialization, too much of commercialization. We are not really ready to have that kind of commercialization. Of course, in US we have private funded universities which are doing wonderful job, but भारत में मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। Thank you Rajeev for this enlightening and interesting conversation. Anything you want to leave a word with your students, the teaching faculty across the globe and people in general? One or two things, tips. Okay, I would like to quote Swami Vivekananda ji. He says, "Arise, awake, and stop not till goal is reached." And we are very rapidly moving forward on the path of development, and the whole world is looking up to us. हमारे यूथ की बात चल रही है। इंडिया इज़ ए वेरी यंग कंट्री, तो युवाओं के लिए यही संदेश है, मेरे स्टूडेंट के लिए भी यही संदेश है कि अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज रीच्ड। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, मैं बहुत ही विक्रम बत्रा, मेजर विक्रम बत्रा, हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छा पेप्सी का ऐड के, उस टाइम में पेप्सी में ऐड चल रहा था, ये दिल मांगे मोर, एंड पेप्सी का ऐड उन्हीं से हिट हुआ। विक्रम बत्रा ने ये दिल मांगे मोर जो फर्स्ट जो कैप्चर की थी पोस्ट, अपनी सेकंड पोस्ट कैप्चर की थी, उनका जो ये था मैसेज था, ये दिल मांगे मोर। कर्नल जोशी को वहाँ से अपना मैसेज फ्लैश करते, दिल मांगे मोर। अनफॉर्चुनेटली
while capturing the third post, he made supreme sacrifice for the day. But ye dil mange more is very close to my heart. I always tell my students, keep, Looking for more. looking for more. Set new benchmarks. Thank you, Rajeev, for sparing your time from your busy schedule and talking to us for the benefit of our viewers in being social. Thanks very much and all the best and many more laurels and achievements. We wish you all the best. And it's Thank you. time for Holi. Happy Holi. Thank you so much. It's really wonderful experience interacting with you, and happy Holi to you also and to all the viewers.